Hello everyone, so welcome to the new video. Today we're going to start the chapter Equality in Democracy. Let's begin the chapter. Chapter 1 Equality in Democracy. Let us learn about define different types of equality in democracy, recognize how human dignity is core to democracy, various schemes of the government that work towards promoting equality, and challenge of democracy. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. वर्ड डेमोक्रेसी जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है डिमोज. And demos means people, and Croatia means administration. So thus, democracy एक form of government है जहाँ पर people participate करते हैं functioning of government. In the words of Abraham Lincoln, democracy एक government है of the people, by the people, and for the people. तो डेमोक्रेसी को इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. सबसे पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. वी ऑल हैव द राइट टू वोट. वी ऑल हैव द राइट to speak, right to express our views and also give our decisions so that the government can take steps on. So India is a democratic country. Active participation by the citizen, freedom to express one's opinion, resolving conflicts through consensus and consultation, quality and justice. ये सब main features हैं democratic government के. Equality एक central theme है, soul of democracy. It is the precondition to ensure करता है justice to all the people of society. यहाँ पर equality का मतलब होता है social, economic and political equality among citizens. All the citizens equal है before the law. They will be protected equally. वो protect होंगे by the laws of the land. State को discriminate नहीं करना चाहिए between the people on the basis of place of birth, religion, sex, caste, creed, race or wealth. So nobody should discriminate any person on the basis of their caste, on the basis of their color, on the basis of their sex. So and democracy teaches us the same. Universal adult franchising and equality. Universal adult franchising means that all adults in the country they are allowed to vote. This is an essential feature of a democracy. Democracy का बहुत ही essential feature. So it is a very essential feature of a democracy that nobody, not even a single person, is discriminated on the basis of his caste, color, creed, or sex. So now no government can claim itself to be a democratic government बिना किसी eligible adults को वोट करे. कोई गवर्नमेंट अपने आप को नहीं ट्रीट कर सकता. इन अ डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर. ये ऑथोराइज करता है हर एक एडल्ट सिटीजन को कंट्री में ताकि वो वन वोट तो जरूर देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वेल्थ कम्युनिटी चाहे वो कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो दैट डजंट मैटर. इफ he is above the 18 years of age then he has a right to vote. Fact. Equality first formally became a part of the Declaration of Rights of Man and Citizen adopted in France after French Revolution of 1789. Equality before law. Rule of law state करता है कि supremacy of law. That means कि जितने भी persons हैं, individuals and government, they are subject to law. Indian Constitution recognize करता है every person equal before law. कि हर कोई इंसान law के नजरों में बराबर है. Which means that law supreme है. Everybody has to abide by the law. And anybody जो violate करता है law को वो liable होता है punishment के लिए according to the law. So everyone is thus equal in the eyes of law. तो कानून की नजर में हर इंसान बराबर है. No person can be discriminated against on the basis of religion, caste, race, place of birth or gender. Every person का access है to all public places including playgrounds, hotels, shops, markets, wells, roads and bathing ghats. Untouchability जो existed है हमारे age old caste ridden society में that has now been abolished by our constitution. वो हमारे constitution ने abolish किया. तो हमारे earlier caste ridden society के अंदर untouchability prevalent था. Dominant caste people indulge करते हैं in insulting the subordinate ones through harsh words and malicious behavior, recognizing them as polluted and unworthy and violated human dignity. तो human dignity जो है that is the core value है democracy. एक सोसाइटी को आप डेमोक्रेटिक तभी बोल सकते हो अगर उसके सारे मेंबर्स रिस्पेक्ट किए जाए एज ह्यूमन बीइंग्स एंड विद डिग्निटी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड होती है और उसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म फॉरबिडन है. किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं किया जाएगा. तो एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी
दैट शैल बी एक ऑफेंस पनिशमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ, पार्ट 3 आर्टिकल 17। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो सबॉर्डिनेट कास्ट से थे, द डाउन ट्रोडन, कंट्रीब्यूटेड लार्जली, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू अपलिफ्टिंग दीज कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। तो डॉक्टर अम्बेडकर एफर्ट ने हेल्प किया ताकि वो सोशल लेवल्स को इरेडिकेट किया जा सके, लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया दलित को एज शेड्यूल कास्ट, एससी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन एंड जॉब्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, लोअर कास्ट को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि in the very last time, or we can say in a many years back, Dalits were treated very badly. So B.R. Ambedkar has made the constitution, and he has, that is why he has given special opportunities for them. Seats are being reserved for the SCs and STs just because they were treated very badly in the olden times. इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर होती है सिचुएशन या कंडीशन जहां पर सारे सिटीजन जो है ऑफ पर्टिकुलर कंट्री को इक्वल असेस दिया जाता है, चाहे वो वेल्थ और अपॉर्चुनिटी। तो हाउएवर ऑफन पीपल जो पुअर हैं और वो बिलोंग टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि लोअर कास्ट या लोअर क्लासेस, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। सोशल इक्वालिटी कंसर्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन सोशल गुड्स का, जैसे कि इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ। सोशल इक्वालिटी देन उसका मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू असेस एजुकेशन एंड हेल्थ। सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक एंशियंट प्रैक्टिस है हायरार्की क्रिएट करने का स्टेटस इन सोसाइटी, यहाँ पर फिक्स सोशल रोल्स भी इनहेरिट किए जाए एंड प्रैक्टिस सिंस एंशियंट टाइम। अर्बन इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो वीकन हो गया ड्यू टू फ्रीक्वेंट इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का इट हैज पास, उसने लॉ पास किए जो प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और कास्ट। तो ये इंश्योर करता है कि पीपल को हम इक्वली ट्रीट करेंगे बाय एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो हाउएवर कास्ट डिस्टिंक्शन स्टिल एक डिवाइसिव रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल इंडियंस डिजर्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फॉर अ लॉन्ग टाइम कास्ट, रिलीजन एंड कलर ऑफ द स्किन वो भी डिटरमाइन किया जाता है, उससे भी लोगों के स्टेटस को देखा जाता है and treatment meted out to them in society. So such discrimination has not completely disappeared. Indian society से ये disappeared नहीं हुए हैं आज भी। गवर्नमेंट स्कीम्स, टू वेज जिसमें गवर्नमेंट के पास ट्राई किया है कि वो प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर सके एंड enshrined in the constitution. Firstly through laws, secondly through implementing the program और schemes ताकि वो बैकवर्ड और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को हेल्प करे। एम जो होता है इन स्कीम्स का होता है कि वो लाइव्स ऑफ दोज कम्युनिटीज को इंप्रूव कर सके दैट हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर सेंचुरीज। मिड डे मील स्कीम, वन ऑफ द स्टेप्स जो टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, पॉपुलरली जिसको हम कहते हैं मिड डे मील स्कीम। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया गया इन तमिलनाडु इन 19। सक्सेस जो है मिड डे मील स्कीम का तमिलनाडु में उससे इंट्रोडक्शन हुआ, अदर स्टेट्स में हुआ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन। तो 1996 में स्कीम रिवाइज हुई ताकि वो इंश्योर करे प्रोविजन ऑफ अ मिड डे मील ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। बेनिफिट्स ऑफ स्कीम देखी जाती हैं ऑन सेवरल फ्रंट्स। प्रोग्राम रिड्यूस्ड हुआ सोशल डिफरेंसेस को बिटवीन कम्युनिटीज एज मिड डे मील्स जो है दे आर सर्व टू ऑल चिल्ड्रन, सबको सर्व किया गया चाहे वो कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर कुछ भी। मील्स को सर्व किया गया सब बच्चों को एट द टाइम और उन्हें एक साथ बैठकर वो खाते थे। एंड ऑल्सो प्रोग्राम ने हेल्प किया है ताकि कास्ट और क्लास प्रेजुडिस को खत्म कर दिया। ये देखिए भाई ये तो गरीब है, ये अमीर है, इसके पास ज्यादा पैसा है, कम पैसा है, ये गोरा है, ये काला है, these things should be removed and they have abolished that. Many places दलित women ने employed किया गया ताकि वो कुक कर सके and serve the meals. The scheme has helped in increasing school enrollment बढ़े, maintaining regular attendance schools में बच्चों की बढ़ने लगी। तो government program like midday meals help in establishing equality among the school going children. Now think and answer, are government schemes and welfare programs enough to promote social, political and economic equality? That we have to discuss it. सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान seeks to make education accessible to the maximum possible number of children in the age group of 6 to 14 years की जो एज है उसमें जो बच्चों को, इस एज के बच्चों को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है
स्पेशली गर्ल्स एंड डिप्रेस सेक्शंस जो है सोसाइटी के। गवर्नमेंट एक प्रमोट करती है बहुत सारे स्कीम्स को ताकि वो गैप बना सके बिटवीन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, बट व्हाट इज क्रिटिकल इज दैट कि एक नीड है कि हर एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट किया जा सके और टू चेंज माइंडसेट लोगों का बदला जा सके। तो ये जरूरी होता है कि पीपल चेंज करें अपना आउटलुक, ओनली देन ये पॉसिबल हो सकता है कि आप इनइक्वालिटी को खत्म करोगे। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी एक डाइवर्स कंट्री में जैसे कि हमारी एक कांस्टेंट फाइट है, क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना, प्रिवेलेंस इन स्टेजेस। कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और एक्ट्स हैं इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट आर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009, जो एम करता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन विलेजेस एंड टू हेल्प इन कर्बिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। फिर इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो सपोज टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज टू पीपल इन विलेजेस। Inequalities in other democratic countries, social inequalities unique नहीं है इंडिया के लिए. We find them in several other democratic countries as well. For example, still ऐसी discrimination अभी भी है अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट यूएसए में. तो ये ट्रू है, इवन दो एक सिविल राइट मूवमेंट इन 1950s से क्या हुआ, पासिंग ऑफ सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में, जिसके डिस्क्रिमिनेशन को फॉरवर्ड किया कि कलर के, रेस के, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. Hence, as in India, struggles for equality जरूरी है या democratic countries across the world. चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए इक्वालिटी के, तो इक्वालिटी भी समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप रिच हो चाहे पुअर, लिविंग इन अ बिग और स्मॉल हाउस, और इट शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड इक्वली. कितने भी आप पैसे कमाते हो, whether you are rich, whether you are poor, whether you are black, whether you are white, whether you are uh, poor, whether you are rich, so whether you are living in a small house or a big house, the equality should be there. So equally before the law and getting equal opportunities. तो preamble जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली ये बताता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इज एन ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर स्टेटस डज नॉट मीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस का मतलब नहीं है हमारा स्टेटस आर सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री. डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है आज भी, एंड डिफरेंट कम्युनिटीज को रेज करनी पड़ती है अपनी वॉइस टू बी ट्रीटेड इक्वली. The extent to which citizens comprehend the meaning of democracy, that has evolved tremendously over the years. बहुत सी communities जो previously not aware of their rights, they have now उन्होंने voice करना शुरू कर दिया demands for equality. As the different government accommodate the demands of the people in some measure, they also face criticism and charges of being biased towards them. Idea of democracy become more elaborate and refined in the process. Goal of bringing more and more people within the purview of democracy, that will take a long time to achieve, but it is not completely वो unachievable नहीं. Summary of the chapter, democracy सबसे popular form of government है world में. Democracy में all adult citizens regardless of their caste, religion, gender, class enjoy करता है right to vote based on universal adult franchise. Constitution of a country एक document है जो lay down करता है basic rule regulations for people and the government in the country. Our constitution recognizes every person as equal. Tamil Nadu was the first state in India to introduce midday meals. Let's move ahead with an exercise for the correct option. Which leader fought for the upliftment of Dalits? Dr. B.R. Ambedkar. Which state was the first to introduce the midday meal scheme? Tamil Nadu. Which official document of the government recognizes every person as equal? The Indian Constitution. Universal adult franchise means all adults in the country are allowed to vote. Let's move ahead with the fill in the blanks. The right to vote is called, that is your constitutional right or universal adult franchise. That said, democracy is the government of the people, by the people, and for the people. That is Abraham Lincoln. In a democracy, all citizens are equal for the law. Article 17 declares the practice of untouchability to be a crime. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.